1.1. The very important terminologies of this chapter are already discussed in previous part of this video. The link of that video is there in description box. You can go and check there. So let's start with the very first question. Is 0 a rational number? Can we write it in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0? ये तीनों हमारी रेशनल नंबर्स की कंडीशंस हैं. तो क्या 0 ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? नहीं. We have to check that. We can write 0 as 0 upon 1. We can write it as 0 upon 2 or any number like 0 upon 50 or any negative number like 0 upon minus 10. The answer of all these will be 0. तो हम इसे इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं. So इन फॉर्म्स से हमें क्या पता चला? Here all the numerators are also integer, denominators are also integers and denominators are not equals to 0. So we can write very surely that yes, 0 is a rational number. Now let's come to second question. Find 6 rational numbers between 3 and 4. The very important thing to be noted is that there are infinite rational numbers between 3 and 4. किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे मीन्स इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं. सिमिलरली 3 and 4 के बीच में भी. सो मेथड क्या है हमारा रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने का इनके बीच के? Here we have to find 6 rational numbers. We'll add 1 in this. What we'll get? 7. So what we have to do? We'll take 3. We'll write here 4. We can write them in this form. P upon Q की फॉर्म में हमने लिख दिया. Then we'll multiply and divide this expression by 7. What we'll get? 21 upon 7. Similarly, we have to do this same thing in this 4 upon 1 also. We'll get here 28 upon 7. हम ऐसे किसी भी नंबर से नहीं करेंगे. हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन. बिकॉज जब हम इसे कट करेंगे we'll get 1. तो 3 upon 4 पे 1 का कोई असर नहीं है. That's why we can do this thing. So हम इसके बीच के 7 नंबर्स अब आराम से लिख सकते हैं. We can write here. So 6 rational numbers between 3 and 4 are 21 upon 7 और 28 के बीच में 22 upon 7, then 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7, 27 upon 7. So this was the method to calculate the rational numbers between 3 and 4. Since हमने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, सो हमारे आंसर्स इनके अलावा भी कुछ और भी हो सकते हैं बिकॉज दे आर इनफाइनाइट इन क्वांटिटी. दैट्स व्हाई वी हैव अनदर मेथड आल्सो. आंसर्स चेंज कैसे हो सकता है? 6 से बड़ा हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो वील गेट आवर आंसर टू बी करेक्ट. हम 7, 8, 9, 10 and so on. We can take any number like this. Let's come to another question. Again, find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. We'll write here the same. There are infinite rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. We'll write it the same way, 3 upon 5 and 4 upon 5. As I have told in the previous question, यहाँ 5 है. 5 plus 1 हम 6 लिख देंगे. हम 6 से बड़ा भी कुछ भी लिख सकते हैं.
सपोज हम दूसरे मेथड ही ट्राई करेंगे, 10 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. सिमिलरली इन दिस पार्ट ऑल्सो what we'll get here 30 upon 50 and here 40 upon 50. Now अब 30 और 40 के बीच के नंबर लिख देंगे. So 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5 are what? 31 upon 50, 32 upon 50, 33 upon 50, 34 upon 50, 35 upon 50. So in this way, we have find out 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. Last question of this exercise, state whether the following statements are true and false. Give reasons for your answer. We are having 3 statements. True statements को prove करने के लिए हमारे पास facts होने चाहिए. And for false statement, we can give any example जो उसे false prove कर दे. So first statement is every natural number is a whole number. Let's see. What are natural numbers? Natural numbers are 1, 2, 3 and so on till infinity. Then what are whole numbers? We have also studied 0, 1, 2, 3, so on till infinity. So what we have concluded that whole numbers are 0 plus natural numbers. तो इससे हमें क्या पता चला? Every natural number, हर एक natural number एक whole number तो है ही. So here it is absolutely true. Then comes second statement. Every integer is a whole number. क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? होल नंबर का सेट हमने अभी देखा, क्या इसमें हर एक इंटीजर्स इंक्लूडेड है? नो. वी हैव टू गिव हियर एन एग्जांपल. सिंस -2 इज एन इंटीजर, -2 एक इंटीजर है, बट इट इज नॉट. हमने एक एग्जांपल से इसे फॉल्स प्रूफ कर दिया. It is not a whole number. So this statement is false. Then comes third statement. Every rational number is a whole number. क्या whole number के सेट में सारे rational numbers हैं? Again no. We can write here since 1 upon 2 ये एक rational number है. But वही same line, it is not a whole number. So this statement again is false. So I hope these questions must be clear to you. If you have any doubt, you can comment in comment section.